Assalamualaikum, student. This is the first part of 29th lecture, and today we discuss very important topic of analytical number theory. This is the uh, quadratic reciprocity and quadratic forms. Also, we discuss quadratic residues, especially quadratic residues. तो ये हमने अगेन एक आपको 3 बुक्स इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये थर्ड बुक से कुछ पेजेस इसमें इंक्लूड करी हैं जस्ट थोड़ा सा इंट्रो लेने के लिए रेसिप्रोसिटी लॉ का, क्योंकि ये दूसरी बुक पे अवेलेबल नहीं था। लेकिन प्रॉपर हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का जो टॉपिक है ज़्यादातर वो दूसरी बुक से ही आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाएंगे और साथ जैकोबी और लेजेंडर सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। तो आए हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ क्या होता है और क्यों हमें क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की ज़रूरत पेश आती है। तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास पेज अपीयर हो रहा है, ये चैप्टर नंबर 3 है, एनालिटिकल द थ्योरी ऑफ नंबर्स। फिफ्थ एडिशन है, एन इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ नंबर्स। एवन नेवन की हमारे पास है ये बुक है। तो उसका चैप्टर 3 है। इसमें थोड़ा सा रेसिप्रोसिटी लॉ को डिस्क्राइब किया गया था जो कि दूसरी बुक पे हमारे पास अवेलेबल नहीं था। In this, the purpose of this chapter is to continue the discussion of congruences by means of a remarkable result of Gauss known as quadratic reciprocity law. In the preceding chapter, the problem of solving such congruences as x congruent to x square congruent to A mod m was reduced to the case of prime modulo p. The question remains as to whether x square congruent to A mod p does or does not have a solution. This question can be narrowed to the case x square is congruent to q mod p, where q is also a prime. The quadratic reciprocity law states that if p and q are distinct odd primes, the two congruences x square congruent to p mod q and x square congruent to q mod p are either both solvable or both uh, not solvable, unless P and Q are both of the form 4k plus 3. In each case, one of the congruences is solvable and the other is not. Uh, तो ये हमारे पास डिस्कशन जैसे बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। गाज का हमारे पास रिजल्ट है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ बाय मींस ऑफ अ रिमार्केबल रिजल्ट। तो उस रिजल्ट से चीज़ों को अकस करने की कोशिश करते हैं या उस रिजल्ट के बारे में मजीद डिस्कशंस करते हैं। लास्ट चैप्टर्स में उस बुक में भी द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग सच कॉन्ग्रेंसेस यानी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंसेस को स्क्वायर रूट ऑफ एम इनको रिड्यूस किया गया था इस केस में कि हम मॉडलो इसका प्राइम यूज करें। तो इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ कॉन्ग्रेंसेस का सोल्यूशन को डिस्कस किया गया और उस पर आसानी पैदा हुई। तो इस प्रॉब्लम को भी हमने मजीद सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ए की जगह पे भी हमने क्यू वेर क्यू एंड पी आर डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स ये यूज़ किए। तो इससे मजीद हमारे पास सहूलत मिली, आसानी पैदा हुई इस टाइप की कॉन्ग्रेंस को सॉल्व करने के लिए। द क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ ये स्टेट करता है कि पी क्यू जो हो वो डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स हो तो x square congruent to p mod q and x square congruent to q mod p ये दो congruences हैं और इधर बोथ सॉल्वेबल होंगी या दोनों सॉल्वेबल नहीं होंगी, नॉट सॉल्वेबल अनलेस p q आर बोथ आर ऑफ द फॉर्म बोथ हमारे पास इस फॉर्म की हो 4k plus 3 फॉर्म के। इन ईच केस वन ऑफ द congruences is solvable and the other is not. This result might appear at first glance to be of
very limited use because of the conditional nature of the statement. Hmm, ज़ाहिर में बहुत सारी कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं कि हमारे पास पी क्यू डिस्टिंक्ट और प्राइम्स हों, कांग्रेस भी टिपिकल इस टाइप की हों, और पी क्यू बोथ 4k+3 फॉर्म में उनको लिखा जा सके। इस वजह से ये बहुत कंडीशनल हो जाता है। इट इज नॉट अ क्रिस्पी decisive. However, the result provides a reduction process. ये जो result है provide करता है reduction process that enable us to determine very quickly whether x square congruent to q mod p is or is not soluble for any specified primes p and q के लिए। इस जो रिजल्ट है इससे अलबत्ता हम ये रिजल्ट रिडक्शन का एक रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एन एग्जांपल ऑफ रिमार्केबल पावर ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ कंसीडर द क्वेश्चन whether x square congruent to 5 mod 103 has any solution. Since 5 is not of the form, 5 इस फॉर्म में नहीं है, the result asserts that x square congruent to 5 mod 103 and x square congruent to 103 mod 5, x square congruent to 5 mod 103 congruent to 103 mod 5 are both solvable or both not. But x square congruent to 103 mod 5 boils down to, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 3 को, क्योंकि अंडर मॉडल ऑफ 5 हमारे पास 103 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो इनको आपस में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5 विच हैज नो सॉल्यूशन, जिसके सॉल्यूशंस नहीं है, एंड x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 1 से 3 हैज नो सॉल्यूशन। तो इससे हम ये रिजल्ट ले सकते हैं कि तो इसको रिडक्शन का बताया जा रहा है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करके हम ये डिसाइड करते हैं कि ये अगर ये इजी होगी हमारे लिए कॉम्पोनेंट, उसके इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो एक्चुअली हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉम्पोनेंट टू 5 मॉड 103 का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस सारी डिस्कशन में क्वाड्रेटिक रेजिड्यू इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर ऑल E such that AM greatest common divisor 1 who A is called a quadratic residue modulo M if the congruence x square congruent to E mod M has a solution. अगर हमारे पास इस कॉन्ग्रुएंट का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ए और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो हम ए को क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कहेंगे रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम। अगर इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है विद रिस्ट्रिक्शन ए एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, और एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड एम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो ए को हम क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कहेंगे रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम। इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, देन ए इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो एम कहलाएगा। ये थी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन। अगर ए एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो और एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ई मॉड एम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो ए को हम क्वाड्रेटिक रेजिड्यू रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम बोलते हैं, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो ए को हम नॉन रेजिड्यू बोलते हैं। Since A plus M is a quadratic residue or non-residue modulo M, according as A is or is not, we consider the distinct residues and non-residues only those that are distinct modulo M. The quadratic residue modulo 5 are 1 and 4, and whereas 2 and 3 are non-residue respect to modulo 5। तो ये आगे सारी इनकी कुछ दिलचस्प प्रॉपर्टीज हैं। ये जैसे हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया था, ये एक स्मॉट पार्ट है, हम दोबारा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू को उस बुक से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास
मेरी कोशिश थी कि थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड प्रोवाइड किया जाए कि क्यों हम रिकॉर्डेड ट्रेजरी को डिस्कस करते हैं और व्हाट इज क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी इन लॉ, वो हमारे पास क्या होता है।